Jai Guruji to all. It's the first time that मैं पहली बार एक सत्संग कर रहा हूँ Zoom में और मुझे पहली बार ऐसा मौका भी मिला था और let me tell you my journey, how I started meeting Guruji. I started meeting Guruji about 2003. Before that, I tell you, I have a achondroplasia. Uh, I have achondroplasia, which is the bone growth problem, and I'm known as a dwarfism, and also did not walk till four before 4 and 5. Between that, when I was 2 years old, I lost my dad. Also, he had a brain clot, brain strokes, and उसके बाद सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत टफ लाइफ होती रहती है मैं और मम्मी का और आई स्टार्टेड स्कूल अबाउट 8. मैं जब 8-9 साल का था मेरा पहला स्कूल मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद then बीच पर I had a learning disabilities and also about 13 or 14 I banged into the car. I had an accident, so one of our under 18 backed me in the car, and life was very ups and downs also. And after that, my mom had a ulcer colitis also because she been painful whole day in the hospital. Now let me start with you how I met Guruji. गुरुजी से मैं मिला था 2003 में जब पहली मेरी मम्मी चल गई थी कोई गुरुजी से पहली बार मिल के उसके बाद मुझे नहीं पता कौन से गुरुजी से मिलने गई जा रही मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई स्वामी या बाबा जी होएंगे कोई लॉन्ग हेयर कोई दाढ़ी वाड़ी होएगा कोई ऐसी मेरा इमेजिनेशन था तो मम्मी ने मुझे बोला कि आप आ जाओ गुरुजी से एक बार मिल लो तो मैं और आई थिंक माय सिस्टर आकृति मैं जब हम पहली बार गुरुजी से मिलने गए थे एम्पायर स्टेट्स में तो पहले में जब when we entered the Empire State inside, the Guruji was not there. मैंने कहा maybe he was in his room अपने कमरे में थे तो हम बैठे थे तब मैं जब स्वरूप को देख रहा था एक तो स्वरूप को मैं ऐसा लगा मम्मी से ऐसे बात कर रहा था कि मम्मा ये गुरुजी है तो my mom was like yeah that's him then when I'm seeing him he looks very different he's not like ऐसे कोई गुरु दूसरे गुरु के जैसे कंपैरिजन में नहीं था देन जब ये शब्द और गुरबानी चल रही थी जब गुरुजी आए मेरे को लगा कि वो शब्द बंद हो जाएगा यू विल डू ऑल द विचार्स बट कोई विचार नहीं था शब्द गुरबानी कंटिन्यूसली चल रही थी और चाय प्रसाद भी दे रहे थे हमको अभी फर्स्ट टाइम आई हैव द चाय प्रसाद देयर एंड वेरी पीसफुल एंड क्वाइट वो देयर जब लंगर भी पहली बार फिर हम खाए थे मैं और मम्मी हम चारों के साथ तो उसके बाद आफ्टर लंगर जब मैं वापस आज्ञा करा गुरुजी को गुरुजी मेरे को देख के कह रहे थे शायद मम्मी को कह रहे थे ए तेरा मुंडा है मेरी मम्मी के सामने तो गुरुजी ने हाँ बताया कि गुरुजी भी बता रहे थे क्या तकलीफ है उसकी और मेरी लाइफ में तो ऐसी तकलीफ तो होती रहती है आई बीन टू बी ऑनेस्ट आई बीन गोल्ड इन स्कूल आई बीन एवरीथिंग द टफ लाइफ माई सेल्फ देन I did not know how I got changed from Guruji. एक बार शायद 2004 या 5 में एक बार मम्मी गुरुजी मम्मी को डांटते थे कि तुम पीछे बैठ जाओ तुम पुरानी संगत है और गुरुजी मुझे आगे बैठा रहे थे शायद मेनका गांधी के साथ मैं तो हैरान हो गया कि गुरुजी व्हाई यू मेड मी टू सिट with Menika Gandhi and made my mom to sit back. Then talking to first time Menika Gandhi, she was not like talking what something. She was just talking like what is your which school you are, what you like, what you don't like, what is your hobbies. ऐसी बातें करती थी. उससे but honestly, I had a like speech garble also problem. Did not told you everything, and
उसके बाद हाउ गुरुजी क्योर माय स्पीच काबल, अभी जो मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ अटक हो रही है तो मुझे माफ करना गुरुजी। तो उसके बाद 2005 में मेरे को याद था जब वी हैड अ स्कूल फाउंडर्स डे once, I got a good citizenship award उस फाउंडर्स डे में। तो आई फील ब्लेस्ड, थैंक्स टू ऑल गुरुजीज गिविंग मी गुड, मतलब अच्छा अवार्ड दिया हमको। तो एक बार जब मम्मी आई थी मेरे को फाउंडर्स डे लेके देखने के लिए, देन शी टेल मी चल एम्पायर स्टेट चलते हैं, गुरुजी को दिखाते हैं। तो मैं और मम्मी जब गुरुजी के गए और गुरुजी was sitting at a sideboard. He was sitting in sideboard and he was wearing a blue t-shirt, I remember, and sitting like this in like sitting and posing like this. And उसके बाद जब मैंने और we came about like early about 5 and 6 because mostly के लोग आते 6 से 7 बजे, तो we came very early उस टाइम में। और मैं बहुत थका था also because I've been tired from school days. I need to go home. I wish Guruji please मुझे तो जाने दो. I don't want to stay for like 3-4 hours there. I don't know. Then Guruji, then my mom would like open my bag and took my certificate and showing to Guruji. And I did not hear what Guruji said. And mom told me, you know what Guruji says to you? He says, very good. And I was so blessed also that Guruji give my permission. Can I go? And he said, yeah, you can go. But I asked my mom, how will you come back? कैसे आओगे वापस? कैसे गुरुजी ने मम्मी को हेल्प किया? I really don't know that much. And now 2006 एक दो सत्संग में शेयर करता हूँ। 2006 में एक मेरे को स्कूल में मना करा था क्योंकि I am I was not good in study also because they told me we're not allowed to study in iOS and you'll have to do skill training. I was like telling ma'ams, please give me one chance. My mom also made me to try it कि please try, इनके लिए try करा दो, but उन्होंने मना कर दिया। तो एक बार जब हम मम्मी और मैं बोले कि चल गुरुजी के साथ बात करते हैं कि क्या डिसीजन थी, तो मैं और मेरा मन नहीं था कि क्या मैं गुरुजी से क्या बात करूं। मैंने मम्मी को भी बोला क्या होगा गुरुजी से बात करने का। तो एक बार हम जब गए बाय स्टेट में तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी कि इन्होंने स्कूल वाले ने मना कर दिया था, तो उसकी तो गुरुजी कहते थे प्राइवेटली करा ले। तो मैंने शॉक हो गया, मैंने कहा क्यों प्राइवेटली क्यों करूं, मुझे अपना स्कूल लाइक ही सेड। देन मेरी गांधी वाज सेड गुरुजी मैं जाती हूँ स्कूल, मैं उनसे बात करती हूँ। तो गुरुजी वाज एंग्री, मैंने कहा था प्राइवेटली करना है। देन I was we were very quiet, whatever his wish. Got admission, father angler, then Guruji ने क्या कराया father angler, I really don't know. I think my mom will tell you after this. 2000 एक और मैं सत्संग शेयर करता हूँ। हाँ, I was writing a journalist. I used to write a very journalist diary in the every night or every morning maybe. मैं ऐसे मतलब dear God लिखता हूँ कि I am very grateful and everything. तो एक बार मैंने डायरी में ऐसे लिखा था कि क्रिसमस में कोई अच्छा मिल जाए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आई डिड नॉट रिटर्न एनी सेलिब्रिटी। तो एक बार कुछ हुआ नहीं था क्रिसमस में, तो हम लोग एम्पायर स्टेट गए थे, मैं और मम्मी। एम्पायर स्टेट में मतलब थोड़ी सी लंबी लाइन भी थी, भीड़ भी थी, क्योंकि it was a Christmas Eve also, and when we were standing in the line on the Empire State संगत के साथ, एक संगत को मैंने आगे में देखा था, कोई आई एम सीइंग हिम इन द ऑल 90s और 2000 में चैनल वी में बीजे करता था, और अब अभी शी डूज आल्सो आईपीएल commentary also, all the cricket like hostess. Then I see him, then I said to my mom, मम्मा ये तो गौरव कपूर है।
My mom doesn't know who is Gaurav Kapoor. I said, and I told her he comes in channel B. उस टाइम में मैं और आकृति देखते थे उसके, ये गुरुजी की कैसा है. I was like excited to see he's coming to गुरुजी. तो आफ्टर दैट जब हम बैठे थे, चाय प्रसाद हुआ, तो मेरा मन था मैं उसके साथ बैठ जाऊं, मैं उससे मिलना है. जब एक लंगर हॉल हुआ, मम्मा ने कहा तो बैठना है बैठ लो, तो मैं चुपके से उसके साथ बैठा. एंड ही सॉ मी, ही वाज जस्ट स्माइलिंग एंड very sweetly, and not even any sevadar or guruji did not stop me to sit with him. I don't know how it was guruji, because the journalist wish came true. And I just said to my mom, I said, Mama, my wish came true. 2007 में तब मम्मी को शायद बोला होगा महाशिवरात्रि में कि 100 बंदे को लेके आना. तो हाउ कोई 100 बंदे में लेके आया नहीं था शिवरात्रि में. तो कैसे गुरुजी ने करवाया आफ्टर ही लेफ्ट हिज मां समाधि. नाउ आई फिनिश माय स्कूल आफ्टर 2010. तो मेरे को एक कॉलेज में एक्सपीरियंस था. तो my I was more interested of music or edit. I was not even interested of editing. पहले मैंने editing का try करना था तब then they know that I was interested of music. So I went for the music course, but इतना था नहीं. But I'm just seeing the other side के college में भी देख रहा था. तो उसके बाद then I feel like कि गुरुजी मुझे कॉलेज भी ट्राई करा दो यार. एक बार कॉलेज भी करा दो. Then on 2011 एक बार मम्मी ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ी थी कि दैट EOC, तो इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी सेल, के जो डिसेबिलिटी लोग कॉलेज एडमिशन दिलवा रहे. Then my mom was like, चल ट्राई करते. Then हम हैंड बैग के लेके एंड ऐसे हैंड बैग लेके नॉर्थ कैंपस पे गए. आई डोंट नो व्हिच कॉलेज आई वाज वांट टू, मेरे माइंड में क्या कॉलेज में था बट हुआ नहीं. बट दे मेड मी टू एडमिशन इन करोल बाग इन गुरु नानक खालसा कॉलेज, एंड व्हिच वाज वेरी फार एंड tough. I cannot like go like in the metro and take a rickshaw. It's very difficult for me. I said, Guruji, I cannot cope with that. Then next day जब मम्मी को उनका फोन आया था कि एक और ट्राई कर रहे हैं कि चेंज करने. किसी ने मुझे बोला था कि तू CVS ट्राई कर लो, ऐसे मेरे मन में आ रहा था. तो एक सरदार जी था अंकल, तो उसने बोला था, हाँ जी अर्पण कौन से कॉलेज में जा रहा है, PAP या PhD या कौन से कॉलेज. तो नहीं यार तो CVS में चले जा, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी में. Then I said, okay, I want to go that college. Then my mom told me कि तुम HR कर लो. तो when we went for admission, trying to do the HRs, and they told us meet principal. When we met principal seeing me like this, कि he knows that how will you go with HR. And he told my mom कि HR में बहुत accounts है, ये नहीं कर पाएगा, मैं आपको tourism देता हूँ. And tourism में it was the last seat they were giving to me. Then how Guruji made me to admission the college also. For the music, I tell you before thing I did not told you. After I done the beat factory course, मेरे को I cannot play like guitars and piano, like very difficult thing. Somebody told me, why don't you do DJ? So मेरे को DJ कराया. 3 महीने में मैंने DJ का कोर्स किया. How Guruji made me to do it, but it was made me like struggle life also. The college में honestly I was not even interested of studying also. I was very bad in the exams. I was very bad in exams also. And एक बार में राइटर भी बहुत मुश्किल से मिल रहे थे. तो मम्मी गई थी एक बार गुरुजी, तो किस बड़े मंदिर में. तो एक किसी आंटी ने मम्मी को शेयर किया कि आंटी कि मेरा बेटा ने 90% ने 12th में पास किया है. Then my mom got idea like that, like कि she's like मेरे बेटे एक काम करना चाहता हूँ, क्या मेरे बेटे के लिए तुम एग्जाम्स कर पाओगे, राइटर्स करवाओगे. और उसने कहा हाँ.
So he held my exams also, and I was not even in study also. Then एक बार कह रहा, then he held my paper also, and एक दो पेपर उसको कुछ याद भी नहीं था, ना इधर मेरे को याद भी नहीं था, उसने पढ़ा भी नहीं था, मैंने भी नहीं पढ़ा था. तो एक दिन क्या हुआ था कि मैंने कहा तू जो लिख रहा है, मैं जय गुरु जी बोलता हूँ. तो तो उसने लिख लिया, तो उसने एंड में जे जी जे लिखा था, जय गुरु जी. Then the result came and you won't believe it. मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने गुरुजी से अरदास करा कि गुरुजी अगर उसने कोई बैक, अगर उसने एक दो बैक करी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ. तो I checked my result, not even a single back I got, not even a single back. How Guruji passed my exams. Then after I finished my college, I don't feel like studying more. Then I feel like doing jobs. कुछ जॉब्स मैंने मम्मी की फैमिली फ्रेंड से किया था, बट ऐसा कुछ था नहीं. तो किसी ने बोला था एक सेलेक्ट सिटी वॉक कर लो, एंड ऑल्सो द गुरुजी's भक्त मॉल ऑल्सो, दे ट्राई किया. मैंने उनको सीवी दिखाया, एंड उनके टीम से मिला. when they saw me they said welcome aboard, and I was like blessed how Guruji made me to work. I was not working as a was worked in reception that time, and आंटी ने मुझे को देख, जो अनुना आंटी थी, जो मुझे बोली थी ऐसे कि ए गुरुजी ने दिया है तेरे को, very loudly to me. And I was like totally blessed. Now there is satsang I want to share about this year. Me and my mom, we had like COVID days, so we did not travel anywhere. तो एक बार जब मैं और मम्मी सोचे कि चलो यार कहीं चलते हैं पहाड़ वहाड़, आई वांट टू गो टू द माउंटेन्स. So she said we can go to Nainital because my dad was studying the Sherwood College, and when I was studying there, sorry, what am I saying? When I was me and then one of my friend, he came with me. He said, "I want to come with you." He is also Guruji's Bhakt also, and he said, "मैं भी आना चाहता हूँ तेरे साथ." मैंने कहा, "Allowed me, but जगह नहीं है, कमरा नहीं है, नहीं मैं कोई बात नहीं, मैं कुछ कर लूंगा." Then I told my mom that my friend wants to join, and she got angry with me कि तुमने ऐसे ला क्यों बता रहे हो सबको. मैंने कहा बुला तो करा तो हमारे साथ कंपनी भी हो जाएगी. And we went for a train to the Katko town, and we take a cab to the Bita and stayed there. Beautiful bungalow. Then रात को मुझे गुरुजी का सपना आया था, and he was wearing same cholas that जो एम्पायर स्टेट का अभी जो मैं देख रहा हूँ, ये जो चोला, ऐसा वाला चोला पहन के आया था. वो स्माइल भी सेम कर रहा था. आई वॉज लाइक हैप्पी एंड माई सेल्फ ऑल्सो कि गुरुजी आए, गुरुजी मेरे से मिलने आए. Then I was like excited to meet it, telling my mom कि मम्मा गुरुजी मेरे से हेलो कर रहे थे, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा था. So my mom was not believing me that I was doing some jokes or something. Then the moment I woke up and I was like, it was a dream. Then I just said to my mom, I was like, thought, can I tell my mom or not? Then after 1-2 hours, I just said, मैंने मम्मी को थोड़ा सा शेयर किया कि मम्मा ऐसा है कि मुझे गुरुजी के सपने आए. She was blessed. Because Guruji came with us to Bhintal and Nainital. And when we went to Satal, Nakuchiatal में कुछ खाने के लिए सोच रहे थे, मम्मी ने ऐसे कुछ मैसेज करे कि यार रुको. तो कोई कर्नल कैफे थे, और जो कर्नल कैफे के जो मैनेजर थे, what was my school friend. He saw me like, oh, what a surprise. Like, this is what Guruji made me to go there. And we had a good cafe there also. After that,
एंड मम्मी ऑल्सो हैड अ ड्रीम कि उनके घर में कोई सत्संग हुआ था, तो गुरुजी ने शायद भूल 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 गई थी कि वो जूती डालने का। फिर उसके बाद हम भी नैनीताल गए थे। आई वांट टू सी माय डैड स्कूल्स आल्सो, एंड वहां में भी डैड स्कूल के पास में किसी गाड़ी में स्टिकर में गुरुजी लगा था। मुझे ब्लेस भी, मुझे वाव लगा था कि गुरुजी आ गए हमारे स्कूल देखने के लिए, पापा के स्कूल देखने के लिए। फिर बीच पर आई वाज लाइक डिहाइड्रेटेड आल्सो, देन फीलिंग, उसके बाद वाज फीलिंग बेटर। The next last dream I had was the Shabad. I never forget. It was so सतगुरु प्यारा मेरे लाने, मेरे कानों में आया था। और वो उसकी भी एक आंटी थी who was no more with us last year, COVID. उसकी उसके मेरे पर सपने आए थे। And after that, I told shared my mom. The next day, after a month, we went to the 1 year thing anniversary, and और वही में शब्द भी बच रहा था सेम। एंड आई वाज लाइक टेलिंग माय मॉम, मॉम यही शब्द था जो मेरे को सपने में आया था। एंड आई टोल्ड आंटी, sorry, I told the uncle and the son and the daughter, I said I had a dream, your mom. And उसके बाद और the last एक बार I was a little off with social media also. I also do very, I make my YouTube channel also, but I don't make anything on Guruji's, and I don't never do like that. Once एक बार मैंने आई गॉट मॉक, तो शायद कोविड के बीच पर एक म्यूजिशियन था कंपोज वाला, मैं आई डोंट वांट टू से हिज नेम, बट ही वाज डूइंग अ ट्रैक कॉल्ड द रुक। तो उसके लिए म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता था गुरुजी के लिए। तो एम्पायर स्टेट में करना चाहते थे, उन्होंने मना किया था। तो हमारे आंटी के घर के जो दरबार था उनके में गए थे हमारे घर के पास। तो एक दिन कि मैंने सोचा ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, तो उसने मुझे बोला था कि अर्पण तुम एक काम करो, तुम लिपिंग कर रहो उसकी गाना, लाइक यू जस्ट एक्सप्रेशन एंड सिंग लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट सिंग प्रॉपर्ली, बट जस्ट डू लाइक इन द फ्रेम। मैंने आई रिमेम्बर द सॉन्ग वाज गली मोहल्ले शहर में सारे नाम के रब पे प्यारे। मैंने उसका एक्सप्रेशन किया, एंड मोस्टली पीपल वर लव्ड इट। आई डोंट नो हाउ गुरुजी मेड मी टू डू दिस एक्टिंग कोर्स और समथिंग। देन उसके बाद तो आफ्टर दिस मंथ एक बार जून में मेरे को कोई किसी का मैसेज आया था, कोई, आई थॉट कि हाय अर्पण, आई एम फ्रॉम दिस एंड दैट। मैंने कहा कौन है, कोई प्रैंक वैंक तो नहीं है, कोई फ्रॉड स्पैम तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैंने आपको एक म्यूजिक वीडियो को ट्राई कर रहा हूँ, एक सिंगर है, उसका 1 मिनट के लिए आपको म्यूजिक वीडियो के लिए करना है, कराओ, करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ कर दूंगा। एंड उस सिंगर के साथ 1 मिनट का जो हमने किया था, थैंक्स टू गुरुजी, उसने मुझे और मजा भी आया था। मतलब आई वाज वेरी हैप्पी माई सेल्फ, बिकॉज आई वाज नॉट want to read, I don't want to be more on social media like that much. So that was Guruji was giving me. My last satsang I will share now, after I'll go with my mom. Guruji said, if you meet, like if I'm meeting all the Guruji, I feel like happiness and blissful. And also I understand myself, what I am. And also I know people are mock on me and from school, from society, even in Guruji Sangat, at Parimata, everywhere. It's not to judge, and you should not judge and curious about that. It's Guruji is giving a blessing. You should like accept whoever comes, and and also accepted that, but किसी को ऐसे मतलब ऐसे मजाक जजमेंट मत करो किसी संगत को,
जो अगर उनकी अगर शरीर अगर अलग है, भगवान ने ऐसे दिया है, वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए. तो then Guruji made me to learn for this thing for me, and he knows that what I want. जब Zoom का सत्संग मेरे को ऐसा लग रहा था, मौका करना चाहता हूँ. बिफोर एक सत्संग था संडे में किसी घर में, और मेरे को सत्संग मम्मी ने बोला तू सत्संग करा दे. मैं तो थोड़ा सा नर्वस था, मैंने शायद 8-9-10 मिनट किया था. फिर उसके बाद ऐसे मन में ऐसे लग रहा था, I said myself, Guruji, I wish I could go in a Zoom. I said something else. Then next day my mom called me and says, Arpan, कि सुबोध भैया कॉल आया था कि आप और मम्मी, आप और मैं सत्संग करें. मैंने कहा मम्मी क्या आपने क्या शेयर किया फोटोज और वीडियोस सबको? नहीं मैंने नहीं करा, I did not. I said tell me the truth. Like no, she said no, I did not. And how Guruji knows that I want to do this? So he knows everything, because he can read your mind or your subconscious mind, and also he will bless you a lot. So please, I feel very gratitude and shukrana to Guruji, and thank you so much to all. Jai Guruji. Now over to my mom. Jai Guruji Sangat Ji. This is the first time that Arpan has done a satsang, and Guruji ki महिमा उसने गुणगान करी है, and it is totally Guruji's blessings कि आज ये कर पाया है. When he had gone to Guruji, and वो जब बैठता था तो हमें आधी बात इसकी समझ ही नहीं आती थी कहता क्या है. आज I myself am surprised कि इतने chronological order में इसने इतना beautiful satsang share किया है. So I'm totally overwhelmed and totally grateful to Guruji for standing by us, for taking us forward and bringing us where we are. गुरुजी के दरबार में गए थे, गुरुजी के एम्पायर स्टेट में बैठते थे. So as I always like to reiterate and always tell संगत कि सब चीजें मिलती हैं. किसी को पैसे का दुख है, किसी को शरीर से है, किसी को इमोशनल है, किसी का कुछ है. So I've had series of issues after losing my husband, in terms of health issues, in terms of Arpan, in terms of no work, struggling. So ये सब करते करते जब गुरुजी के दर पे पहुंचे, और आज जो मैं कहती हूँ कि गुरुजी के दर से हमें क्या क्या चीज मिली. सबसे पहले एक ठहराव, एक एक्सेप्टेंस, एक to accept things the way they come. You feel that there is an umbrella over your head, and a guiding force which keeps guiding you. You learn to go forward, whatever may be the circumstances. Yes, he gives us very, very happy moments, and what a beautiful sangat you can share with, you can go and hug, you don't need to explain who you are. किसी के साथ एक बैठ के ऐसे बातें करते हैं जैसे जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है. एक ऐसा दर्द है गुरुजी का, जहाँ हम मत्था टेकते थे, हमने कोई एक नवा पैसा नहीं दिया, हमें सिर्फ वहां जाके एक हैप्पीनेस मिली. हमको लंगर मिलता था, एक ब्यूटिफुल, एक डिवाइन फ्रेग्रेंस, एक डिवाइन जगह थी. when we look back, it is so beautiful that हमने शायद उसकी इतनी कदर नहीं करी. और आज जब वो गुरुजी नहीं है और वो इतनी जगह, एक जगह जा रहे हैं, एक जगह देश में गुरुजी का नाम फैला जा रहा है. एंड ही इज ऐसा कोई दर है जहां पर तुमको कुछ भी देना ना पड़े और तुमको सिर्फ मिले ही मिले. सो गुरुजी ने हमें किस चीज से जोड़ा? गुरुजी ने हमें गुरबानी से जोड़ा. आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, बट ठीक है, गुरुद्वारे जाते हैं, वहां भी बड़ा आनंद आता है, सब कुछ होता है, बट वी डिड इट एज अ रिचुअल.
गुरुजी के यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे हमें खींचे चले जा रहे हैं. We get connected to the Shabad Kirtan, which we were not. We were more involved in the rituals, in the कि भी हमने सिर ढक के जाना है, हमने वहां पर जाके इस नियम से करना है. गुरुजी ने सब कुछ वही लंगर वही खिलाया, 4 जनों को एक थाली में खिलाया, और बहुत कुछ सिखाया. I mean, गुरबानी में जो वो तत्व है, वो जो हम अपने आप वो अंदर से हमें उसकी मीनिंग्स आते हैं, जो पंजाबी नहीं भी जानते. You know that Sangat, there are Muslim Sangat, there is South Indian, there is Bengalis, there is Udiyas. I mean, a whole lot of range of people who are getting connected to Gurbani. I mean, it is absolutely amazing. Ki Gurbani, actually, if you notice, is an amalgamation of all the religions. मतलब आप देखो कि उसमें राम भी है, रहीम भी है, there's Allah, there's Krishna, there is, I mean, everything put together. It is simplified, and it is a narration in all, it totally rag form. और वही गुरुजी ने वही शबद कीर्तन in rag form, the best of rags, he would connect us with. And again, listening to Gurbani cleanses you, gives you meaning to life, and of course, I mean, it is Guruji who's doing it. तो ये जो जर्नी हमें मिली है, इसका I think we should be all very, very grateful that we are part of this whole thing. What is coming to me right now is a little bit about my last bit of health issues that I had, and I will share that कि मेरे को बहुत ही ये अल्सरेटिव कोलाइटिस काफी सालों से थी, जब से अर्पण का एक्सीडेंट हुआ था. So this is about 2000 में हुई थी. So I would get ulcers in the lower intestine, which would be very painful, which would bleed, and I used to be sort of on a lot of medication, on steroids, sometimes on blood transfusions, and I'm highly diabetic, and I'm hypertense, and a whole lot of other issues. So ये जब गुरुजी के लंगर खाती थी, मिर्ची वाला लंगर खाती थी, how it was kept at bay. I go and have jalebis, imartis, I mean, whatever was given, laddus. I mean, एक हाथ में इतने सारे लड्डूस गुरुजी ने देने, सब खाए, सब मौज करी. And abhi in 2016, so the colitis had gone so bad that I had gone to several doctors, and they said how Guruji sent me to AIMS. They knew a surgery like this would cost hell of a lot, and how I was guided to AIMS, and there the doctors said we'll have to remove the large intestine, and you will have to, and I was resisting. I said, nahi, mujhe nahi karwana, mujhe nahi karwana. So unhone yahi kaha ki aap dekho, this is the last straw. Otherwise this whole thing is resulting into a cancerous this thing. Abhi bhi hame biopsy karni padegi, but you need to, get this whole thing removed. The doctor went to the US and he left a word कि इनकी अगर कोई इनको जाता होए तो इनको emergency surgery में ले लेना. I was resisting, and I said नहीं, ये करवा दो, ये वाले इंजेक्शन लगवा दो, ये 1.5 लाख का इंजेक्शन लगवा दो, कर दो. And here there is nobody to earn, or nobody to kind of look after you or look after your household. And I get into the hospital and I'm in pain, and then the next day I said, jo karna hai karo. So I'm taken on to a surgery, which again the doctor said that today is Budh Purnima, and since it's a holiday, if there is no other emergency, we'll take you in. They took me in at 10 in the morning, and I was out at about 4:35, where they, removed my intestine. A whole lot of things had gone through. I came back and I was put into ICU beds in the medical institute. And, sorry, I had to share this. Let me go back. When I had kind of just got into the hospital, the doctor had told me that, if it doesn't settle down at home, you come over, we'll have to, see what is happening.
So, I mean, there was no bed there, and they put me onto a makeshift bed, which was number 7. I did not notice it, but okay. Then I said, I can't stay here because I need a toilet all the time, and I have to go to a public toilet here, which is in the ward. I can't use it. So I kept on shouting, "Mujhe kahin privately le jao, mujhe privately le jao, main nahi kar paunga." Finally, anyway, they got me a room, and this room was also number 1006, again a number 7. And these things came to me much later. And then when I'm taken in for the surgery, and the surgery happens, which was also in theater number 7. And then I'm put onto again an ICU bed, which is also number 7, because I hear, when I wake up, I hear number 7 ke relatives ko bulao mom, number 7 ke relatives, and I'm looking around ki kaun hai number 7, and sure enough, it was me. So then I was there, and then the doctor decided ki nahi, here you are more prone to catch infection, so we'll put you back to the room and we will monitor you there. I'm put back to the room, and that again was 1006, and I am there. And I stayed a month, where of course they took out the small intestine from the stomach, and I was to have an external bag, and I mean, getting used to all those things, and you're angry, you don't know how to look after, you've lost out on work, you don't know how the house is going to run. And then I get out, and then I'm supposed to be discharged, and they would discharge somebody, sab kuch ban gayi. It was 6th. And I had rectal bleeding, and I don't know what all. They retained me for a day, and I was out on 7th. So I come back home, and, of course, I'm recovering, and I'm sort of getting into it. Then I had read that, these days they do out of the small intestine, because if the large one is still there, they can connect it to the rectum. But mine, the entire had to be removed because it was really, really bad. And they did not take a chance, so they removed the entire thing. So this was a new technology where they construct a small little pouch with the small intestine, which can retain the stool for some time. And you have a normal way of, letting go through the rectum. So and my skin was very delicate, and, I used to get a lot of skin issues around my stomach with the bag, and I was, again, painful. But yes, that excruciating pain from the colitis was not there. So, dheere dheere khana pina, sab kuch shuru hua, you lost a lot of weight. Anyway, it was again Guruji, वो हाथ देके उन्होंने बचाया था कि वो कैंसर नहीं निकला, और वो मेरे साथ रहे हर समय. वहाँ पर जब भी मैं पॉकेट में सर्जरी के लिए गई थी, I put Guruji's picture, and the surgeon took it out. He says, ये क्या है? I said, इनको रहने दो साथ में. And when I came out, I don't know where the picture went. So I come out of hospital, and then I'm deciding on the second surgery, which after a year and a half, I go back to the surgeon. I said, nahi. So he says, you're diabetic. So he said, nahi, aise to cases aate hain, but we can definitely, but the first two months will be very tough, but I'm sure you'll manage. So I very bravely, nahi, mere ko karwani hai second surgery bhi kara ke karwa le. So I go in for the second surgery, and of course, it was far more complicated than the first one. And again, I come out, I'm put into the room for some time, and after about 15 days, they discharge me. कि धीरे धीरे भूख लगाएगी, अभी आप चलो घर चलो. And I did have a little kidney issue, but they said this is manageable. I come home, and for another 15 days, I could not eat a drop of food, nothing at all. And I'm lying alone, and I don't know. And then my sisters who live away, they kind of said, we'll take you back to the hospital because we can't take you to another place. So let's talk again and let's take you back because it can't carry on. I was vomiting, I was, nausea, and I didn't know what was happening to me. And when I went back, the doctors realized when all the tests were done that my potassium was very high. There was a whole lot of it, was almost like a septicemia, and I had
almost all organ failures at that point of time. I was resulting into that. Kidneys were not functioning. कुछ I mean, you name it. Lungs के लिए कुछ हो रहा था, कुछ उनको यही था कि heart के ऊपर effect आ रहा है. But believe me, if I was any other hospital, I would have been put onto dialysis. I would have been, a whole lot of other issues would have happened. And again, being alone, my daughter was married. She had, issues, and she couldn't come to see me. So, I mean, there is a pain that you want to be with your children, but for whatever reasons, they could not come. And Arpan can't do much. And how, I mean, I've been looked after. तो कभी-कभी वो एक sugar syrups type का वो चढ़ाते थे. There was not a single vein that was available. वो baby वाली वो लगाते थे सुइयां जिससे वो candula की ताकि वो मेरे के अंदर जा सके. And they were treating me. And kabhi kidney wala, kabhi koi. And I was kind of, now I felt, now this is the end and I think I will not be able to survive. Till one fine day, a voice comes into my head and says, Neena, you can't give up. You have to come back. You have lived your life and you have to come back. And sure enough, that was the returning point. And I spent a month in the hospital. And again, the third surgery would have connected the whole system to the rectum, but the second surgery, then, I mean, I've got 2 intestines coming out of my stomach, and I still have an external bag. I'm still on to, 4 injections for insulin. I'm on, hypertense. I've had a bladder tumor, a whole lot of things. I mean, but that is, I said, कि सबको कोई ना कोई शारीरिक दुख कुछ होता है. But गुरु की शरण में आके हमको वो चीज, वो कैसे हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाते हैं, and how he's taking us forward. I mean, and प्यार किससे मिलता है? सारी संगत से. आज भी बहुत प्यार मिलता है. So again, your life becomes meaningful. You start looking forward to living. That this is a journey we have to complete. This is an examination that we have to give. Whether in our question paper we get difficult questions or we get easy questions, or we have to find our answers and we have to keep living and looking forward to what we get. I mean, and we are so blessed to have Guruji in our lives. I think, I mean, that is the one thing that I have to be most grateful for. That इस जिंदगी में अगर कुछ worthwhile हुआ है तो इस जन्म में हमें गुरुजी के दर्शन मिले, गुरुजी का संगत मिली, गुरुजी का कीर्तन मिलता है, सत्संग मिलते हैं, sharing मिलती है. Or as I always say, that sharing is like an exam, because we want to share what he would have wanted us to share with the Sangat. What, he never said a word. He never gave us anything. He used us as mediums to share our experiences to connect people. So I think, I mean, we are very blessed. मेरे को गुरुजी ने एक शिवरात्रि पे बोला, अच्छा तू आएंगी ना? He would always tell me, इन्ने बंदे लेके आए, देखिया ओनू लेके आ, वो तेरी अकाउंटेंट फ्रेंड है ना, ओनू लेके आ, नहीं आंदे ना कोई गल नहीं. And last Shivratri, when he told me 100 bande, not a single person came with me. And I came and prayed to Guruji. I said, Guruji, tusi jano tuada kam jane. I have no idea how to get these people. You won't believe it that after he left his body, how many people from the colony, I don't know whether it's 400, 500, 1,000, जिनको मैं बड़े मंदिर लेके गई, yes, it's their journey, they have to take it forward. But वो गुरुजी ने एक सेवा जो दी थी कि we to connect people, वो आज भी देते हैं और आज भी करवाते हैं. So again, thank you so very much for this opportunity again, and Pulchuk Maaf, and we are extremely grateful that for giving us this lovely opportunity to be with all of you and share our experience with you. Thank you so much. One last I want to say, Guruji, I'm really sorry for my speech. जो गलती, अगर मेरी कोई गलती हो तो माफ कीजिए, पर